ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं हाउ टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हाफ लाइफ मेथड, सेकंड है ग्राफिकल मेथड, थर्ड है इंटीग्रेटेड रेट लाइफ मेथड, फोर्थ है इनिशियल रेट मेथड। हाफ लाइफ मेथड, जीरो ऑर्डर टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 के इनिशियल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर टी हाफ इक्वल 0.693 अपॉन के टी हाफ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट 1 माइनस एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर टी हाफ इक्वल टू 1 बाई के ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ T1 A1 T2 T1 T2 T1 by T2 equal to A1 upon A2 power 1 minus n. T half is directly proportional to A naught power 1 minus n. The half life of decomposition of compound is B ms mm. When the initial concentrated reaction is double, half life reduces to 10 minutes. Find the order of reaction. एक क्वेश्चन है दोस्तों उसी हाफ लाइफ पीरियड पर। तो T1 इक्वल टू T2 अपन जानते हैं T1 अपन T2 इक्वल टू A1 अपन A2 पावर 1 माइनस एन। T1 20 दिया है, T2 10 दिया है और A2 जो दिया है वो ट्वाइस ऑफ A1 है। यहाँ से n की वैल्यू निकलेगी, n की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक क्वेश्चन और है, देखिए फॉर ए गैसीय द इनिशियल प्रेशर एंड कंसंट्रेशन करस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ डाटा 8 सेकेंड। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें भी हमको पता है T1 अपॉन T2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 पावर 1 माइनस एन। n की वैल्यू 3 आ गई यहाँ पर। दूसरा है ग्राफिकल मेथड ट्रिक, कंसंट्रेशन लॉग कंसंट्रेटेड वन अपॉन कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। कंसंट्रेशन टाइम जीरो ऑर्डर, लॉग कंसंट्रेशन अपॉन टाइम फर्स्ट ऑर्डर, वन अपॉन कंसंट्रेशन टाइम सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, 75-50%। इंटीग्रेटेड रेट लैब मेथड एंड ट्रायल मेथड। ए इक्वल टू 500 300 200 टी इक्वल टू check if that order t half equal 2.303 log a naught upon a k equal to 2.303 log a naught upon a initial remaining a equal to a naught kt. Check if two values of k are same, find the order reaction. K equal to a naught upon a minus a upon t, for two values of k is same, zero order. Second order is 1 upon t 1 upon a minus 1 upon a naught a plus b product. फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के इक्वल टू को पता है 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए है। K1 इक्वल टू 2.303 लॉग 10 50 अपॉन 30 2.303 2 इंटू 5 अपॉन 3 2.303 अपॉन 20 लॉग 10 और 5 बच अडीनियस इक्वेशन। के इक्वल टू, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ए पावर माइनस ई अपॉन आर टी एक्टिवेशन एनर्जी रेट कांस्टेंट टेकिंग लॉग इन इक्वेशन फर्स्ट लॉग के इक्वल टू लॉग ए प्लस ई माइनस ई अपॉन आर टी लॉग ई के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई अपॉन आर टी log base 10 k equal to log a minus e upon 2.303 RT for two different temperature T1 and T2 rate constant is b K1 and K2 log K1 equal to log a minus e a 2.303 RT1 का log K2 equal to log a minus 2.303 RT2. Now substitute 4 equation into from 5 log K2 upon K1 equal to e a upon 2.303 T2 minus T1 upon T1 T2. What will the effect of temperature on rate constant K equal to a ई पावर माइनस ई अपॉन आर टी हम लोग जानते हैं अडीनियस इक्वेशन से। एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज। ई पावर माइनस ई अपॉन आर टी इक्वल टू माइनस ई वन अपॉन ई पावर ई अपॉन आर टी इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई 10 डिग्री रेट रिएक्शन डबल के इक्वल टू ए पावर माइनस ई अपॉन आर टी ई इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन द वेलोसिटी ऑफ द reaction depends upon the two molecule of reactant. 2A is turned into product. A plus B is turned to product. Let initial concentration for both reactant is A and after time t concentration A minus x remain. According to law of mass action dx upon dt equal to directly proportional to A minus x dx upon dt equal to kx constant k A minus x का होल स्क्वायर dx upon d A minus x का होल स्क्वायर इक्वल टू k dt. इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट dx अपॉन dt इक्वल टू k 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx अपॉन a 1 अपॉन dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू k dt. लेट a माइनस एक्स इक्वल टू p dp अपॉन p स्क्वायर इक्वल टू माइनस p स्क्वायर dt. p पावर -1 अपॉन -1 इंटीग्रेट करने पर p पावर 1 तो dx अपॉन 1 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू a 1 अपॉन a माइनस एक्स k इक्वल टू 1 बाई टी एक्स पावर अपॉन a माइनस एक्स k इक्वल टू a बाई टी एक्स टू 1 a माइनस एक्स इक्वल टू k 1 बाई टी एक्स अपॉन a माइनस एक्स 1 ग्राम मोल लीटर इंटू फिर 1 अपॉन इंटू ग्राम मोल लीटर इनवर्स इंटू अपॉन ग्राम
mole liter inverse. T equal to 1 by T A upon A minus X. Hydrolysis of ester in presence of base, ये भी important दोस्तों. CH3 COO C2H5 plus NaOH CH3 COO minus sodium carbonate C2H5OH phenol alcohol. Thermal dissociation of acetaldehyde ethanol 2SCH4 methane plus 2 carbon monoxide. First order quantity rate equal to minus dr upon dt equal to rate equal to kr power 1 equal to minus dr upon dt kr power 1 dr upon dt r equal to k dt dr upon dr equal to minus k dt log r equal to minus kt plus I at t equal to r equal to r naught ln r0 equal to minus k into 0 plus I is equal to ln r0 ln r log r by r naught is equal to minus kt log r naught by r equal to kt ln a is equal to 2.3 log a 2.303 log r naught by 1t r naught by r is equal to k. न्यूक्लियर फ्यूजन क्या था दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट था. प्रोसेस ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू far more lighter nuclei is called nuclear fusion. When a slow moving neutron is striking with a uranium nucleus U-23592, it is split into Ba at 4156 and Kr 3692 along with three members and a lot of energy. Nuclear chain reaction equal to first controlled chain reaction 235 uranium plus 1 neutrino Sr strontium 3894 plus xenon 54 140 plus 2 and neutrino particle. The collision cross section area and spare potential between them. The potential energy VR depend upon the separation R of their centers. VR equal to 0, K greater than A1 plus A2, K less than equal to A1 plus A2. Infinite impact parameter after collision with a molecule would deflect or not. There will be a collision if B is B is less than A1 plus A2. Cross section area of tube is equal to pi A1 plus A2 का whole square. The cross section area of tube is called collision cross section. A1 equal to A2 equal to A. Sigma equal to pi A plus A का whole square. Pi D square equal to D equal to 2. Diameter of molecule D is diameter as temperature increases. As temperature increases, cross section area decreases. Nuclear stability. Liquid drop model versus nuclear cell model. In the case of nuclei, the law of forces between the nucleons is not well understood. We have don't any exact theory regarding structure of nuclear nucleons is not well understood. Electrostatic and electric exchange forces. That's why the best way to study the nucleus is nuclear models. Basing which nucleons maintain the identity. They don't fuse together and the nucleons are bound by the short-range nuclear force. Liquid drop model. It is also known as point model proposed by Niels Bohr in 1937 and was further developed by Wheeler and Frankel. Observation nuclear volume is roughly equal to its sum of volume of individual particle. Nucleus can be considered as a bunch of particles which are bound together by mutual attraction in the same manner. A drop of water is an aggregate of several water molecules which are held together by surface tension. As the drop size increases, surface tension increases, and hence the drop disintegrates. Nucleus can be controlled as incompressible liquid with the very high density. As the molecule nucleons are added to nucleus, just like temperature of drop is increased, the evaporation of particles from the surface of nuclei commences in the same way. As the molecule from the surface of liquid drop resultant element different in comparison in case of nuclei composition, same in case of nuclear liquid drop model. Mary described mechanical follow nuclear reaction. Nuclear fission was explained to calculation of molecular binding energy and properties of its isobar studied. Deep various elements explain the stability of lighter nuclear elements. Unable to explain nuclear isomers cannot explain abnormal high bond in energy dissociation associated with the magic number of either proton or neutron. Nuclear cell model proposed by Myers and notified by Jensen in 1956-49. It represents a systematic form of nuclear mind exploration is based on the fact that the nucleons are distributed in a number of discrete energy levels are soluble satisfying certain quantum mechanical conditions. Each cell has a different number of nucleons of one. It's regarded as a closed or filled cells. Thus, protons and neutrons are arranged in separate well and are there allow
spin orbital coupling of each individual nucleus in the cell but interaction with nucleus of other cell. It explains some nuclear properties such as stability of nucleus, relative evenness, bonding energy, spin and magnetism, correlation between nuclear property and magic number. It indicates the possibility of cell structure in nucleus according to cell model. Protons and neutrons are arranged in the cell just like electrons are in the electrons are arranged in this cell having 2, 10, 18, 36, 54, 86 filled cells. Similarly, protons and neutrons are arranged in cell with number note. Nuclei have filled cell are more stable than unfilled nucleus. Inert like electron obey all full quantum numbers and Pauli exclusion principle explanation. In even nucleus, protons and neutrons are remain in the pairs, just resulting in the cancellation of one another is spin and angular momentum zero. In even have half interpret regular momentum study nuclear properties spin of odd mass and number of nuclei can be determined from odd nucleons in nuclei. Correlation of nuclear asymmetry with magic law, the identical spin and closely similar magnetic movements for certain groups up to are three isotopes with odd A and odd Z have been explained. The strong nuclear. धन्यवाद दोस्तों, यहीं बस समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।